हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू एलन ऑनलाइन। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज में हो रहे या होने वाले ओलंपियाड्स के बारे में। हम काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन में आते हैं और ये बच्चे हमें बताते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में जब हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस की बात करते हैं, तो बच्चे यूजुअली इनकी तैयारी अपने एग्जाम्स के वक्त कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चा ऐसा भी है जो इस तैयारी को डे 1 से कर रहा होता है। इसका बेनिफिट उन्हें उनके स्कूल एग्जाम्स में तो मिलता ही मिलता है, पर साथ ही उनके स्कूल की तरफ से या एलन की तरफ से जब उन्हें इन सब्जेक्ट्स में हो रहे ओलंपियाड्स के बारे में पता चलता है तो वो इन ओलंपियाड्स में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी डे 1 से की थी। अब यहाँ पर हम इस सेशन को लेकर आए हैं ताकि आपको डे 1 से बिल्कुल शुरुआत से पता लग सके कि इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से ओलंपियाड्स हो रहे होते हैं। बीइंग अ सोशल साइंस एजुकेटर, मैं आपको सबसे पहले सोशल साइंस में हो रहे ओलंपियाड्स के बारे में बताऊंगी। सोशल साइंस में सिल्वर जोन और एसओएफ दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड करवा रही होती हैं। ओलंपियाड जो है वो अपने आप में महत्वपूर्णता रखते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपोजर काफ़ी पहले मिल जाता है। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत सारा आइडिया हमें शुरू से लग जाता है और बच्चों इन एग्जाम्स को देना इम्पॉर्टेंट होता है। सो कीप इन माइंड कि हमें इन ओलंपियाड्स में रजिस्टर करना है। अब सबसे पहले हम बात करें ISSO जो सिल्वर जोन कंडक्ट कराता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, इसका जो सिलेबस है उसे समझते हैं और हमें रजिस्टर कैसे करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पर हम बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो ISSO में आपसे ISSO विच इज बीन कंडक्टेड बाय सिल्वर जोन, तो आपसे 9th और 10th में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको 50 मिनट्स के ड्यूरेशन में जो है आंसर करने होंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे ही हमें बड़ा मजा आता है MCQ सॉल्व करने में, राइट? और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। OMR शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसी में आपको अपने आंसर्स जो हैं फिल करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लास 9th और 10th में एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो लगभग एग्जाम पैटर्न सेम है। चारों ही आपके जो रीम्स ऑफ द सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनसे जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है वो लगभग, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो लगभग 8 क्वेश्चंस बराबर से इन तीनों रीम्स से होंगे और इकोनॉमिक्स से करीबन 6 क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो अराउंड 2 मार्क्स ईच होगा। अब सेक्शन 5th विच इज सेट टू बी अचीवर्स कॉलम, स्कॉलर्स जोन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी होगा क्योंकि इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होगा। और इस केस में 10 क्वेश्चंस के लिए आपको जो मार्क्स रिवॉर्ड होंगे वो 4 मार्क्स ईच, यानी 40 मार्क्स का आपका अचीवर्स सेक्शन होगा। इन ऑल ये जो पेपर है वो 100 का जो मार्क्स का वेटेज है वो कैरी करेगा। अब एग्जाम सिलेबस की बात की जाए तो 40 क्वेश्चंस 50 मिनट्स में और क्लास 9th का जो सिलेबस है, आपकी पूरी NCERT जो है, आपका जो प्रॉपर सिलेबस है वही इस एग्जाम का सिलेबस है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि काफ़ी कुछ या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पुराने पढ़े हुए के बेसिस पे भी हमसे पूछे जाते हैं। तो आपकी ओवरऑल टेस्टिंग जो है वो ओलंपियाड में हो रही होती है। अचीवर सेक्शन, स्कॉलर जोन में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली देखा जाता है कि वो आपके करंट क्लास का ही होता है अचीवर सेक्शन, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी होंगे। अब एग्जाम सिलेबस हम बात करें क्लास 10th की, क्लास 9th का सिलेबस हमने देखा, आगे हमने क्लास 10th का सिलेबस, पूरी NCERTs, पूरा सिलेबस जो आपने स्कूल में अपना पढ़ा है, एलन में आपने पढ़ा है, वो आपका पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा और साथ ही साथ अचीवर्स सेक्शन सेम फॉर्मेट 9th और 10th का चलेगा। बच्चों, इसी तैयारी के साथ 19th मई को हम आने वाले हैं आपका क्विज सेशन लेने।
वो जो क्विज है, अगर आप क्लास 10th में अपीयर कर रहे हैं तो क्लास 9th का पूरा सिलेबस और 10th का जितना सिलेबस अभी तक आप कर चुके हैं उससे ही आपसे क्विजेस करवाई जाएंगी, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। ऑन 19th ऑफ मे रजिस्टर योरसेल्व्स। ध्यान रखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि हम आने वाले हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्विज सेशन लेकर। चलिए, ये एक सैम्पल पेपर है जो हमने अटैच किया है ताकि आपको पता लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सेम फॉर्मेट है, लगभग आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर देखोगे वो कुछ ऐसा ही आपको नजर आने वाला है। अब एग्जाम डेट्स क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, यानी अप्लाई करने की डेडलाइन है, वो 1st वीक ऑफ जुलाई टू 31st अगस्त, इस बीच में आपको ओलंपियाड के लिए रजिस्टर कर लेना है, आपके स्कूल के थ्रू या एलन के थ्रू। हाउ टू रजिस्टर वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपकी जो एग्जाम का लेवल 1 है, इसकी 2 डेट्स हमारे पास हैं, एक 11 नवंबर 25 और दूसरी 3 दिसंबर 25। ये 2 एग्जाम डेट्स जो हैं वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सिल्वर जोन के थ्रू बताई गई हैं। आगे देखते हैं ये जो डेट्स हैं, हाँ, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी जो डेट टेंटेटिव पता है वो यही डेट्स हैं। अब हमें रजिस्टर कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो ISSO का जो फॉर्म है, आपके स्कूल्स में प्रोस्पेक्टस आ चुके हैं, आपके स्कूल में फॉर्म्स आ चुके होंगे, राइट? तो मैंने आपको बता दिया, जुलाई 1st वीक जैसे ही छुट्टियों के बाद स्कूल जाएंगे, सबसे पहले अपने रिसेप्शन से, स्कूल रिसेप्शन से पता करेंगे कि क्या हमारे ओलंपियाड्स के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, और साथ ही साथ एलन डिजिटल के ऐप पे भी आपको ये हेल्प मिलेगी। और जो एग्जाम जो ऑर्गेनाइजेशन सिल्वर जोन जो करा रहा है, सिल्वर जोन की जो लिंक्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है ताकि आप अपने आप को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। फर्दर अब हम बात करते हैं ISSO की, जो SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है वो कंडक्ट कराता है। तो SOF के जब एग्जाम पैटर्न की बात की जाती है तो क्लास 6 to 10th, पूरे 6 to 10th का एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों ही सेक्शंस आपके आते हैं, तीनों सेक्शंस। साथ ही साथ 9th 10th में एक सेक्शन और ऐड हो जाता है, वो है इकोनॉमिक्स का पार्ट। तीनों ही सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगेन वी हैव अचीवर्स सेक्शन, जिसे स्कॉलर्स सेक्शन भी कहा जाता है, which has total 5 questions and that carries 3 marks each। 15 मार्क्स का इस केस में आपसे स्कॉलर जोन, अचीवर्स सेक्शन आपको अपीयर करना होगा। और टोटल मार्क्स जो हमारे SOF का ओलंपियाड कैरी कर रहा है वो है टोटल 60 मार्क्स। अगर हम सिल्वर जोन के ओलंपियाड को याद करें तो वी वर फाइटिंग फॉर 100 मार्क्स देयर, बट हियर इट इज द टास्क ऑफ 60 मार्क्स। एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो ओलंपियाड में इधर जो है 70% सिलेबस जो है आपके करंट क्लास से आएगा, और साथ ही साथ 30% पेपर जो है वो आपकी प्रीवियस क्लास के सिलेबस से कनेक्टेड होगा। तो दोनों ही क्लासेस हमें बहुत ध्यान से और बहुत पूरी तैयारी के साथ अपीयर करनी है। अचीवर्स सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपके करंट क्लास जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसी से होंगे, यानी जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो आपकी करंट क्लास से ही होंगे। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अगेन क्लास 9th की जो पूरी NCERT है वो आपका सिलेबस है। 1 घंटे का आपके पास टाइम है, 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। और स्कॉलर्स जोन, अचीवर्स सेक्शन जो है वो भी है, इसमें भी बहुत सारे एनालिटिकल थिंकिंग जो है आपकी चेक की जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति पर होता है जो हमारा स्कॉलर्स सेक्शन है या अचीवर्स सेक्शन है। क्लास 10th के लिए अगेन जो सिलेबस है वो आपकी पूरी NCERT है। और साथ ही साथ अब बात की जाए एग्जाम डेट्स की, तो एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन डेडलाइन वही है। करीबन 30 दिन पहले, 30 डेज बिफोर द एग्जाम डेट आपको रजिस्टर करना होगा। और लेवल 1 एग्जाम की 3 डेट्स अभी हमारे पास आई हैं, 18 सितंबर, 20 नवंबर और 23 जनवरी, राइट? ये 3 डेट्स हमारे पास हैं जो टेंटेटिव डेट्स है, सब्जेक्ट टू चेंज है। अभी तक जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एग्जाम की डेट्स ये होंगी। और आगे बात की जाए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें रजिस्टर कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि SOF की तरफ से या सिल्वर जोन की तरफ से, दोनों ही एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमारे स्कूल्स में प्रोस्पेक्टस आ जाते हैं। आपको अपने स्कूल के रिसेप्शन पर चेक करना है, साथ ही साथ एलन डिजिटल की ऐप पर भी आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती है।
और ये लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट की, इससे भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ऑल, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी है, आप सब जो हैं ओलंपियाड्स के लिए रजिस्टर करेंगे. और विश्वास रखिए, अगर आप भरोसा करते हैं अपने आप पर, तो आपका आधा काम जो है वो हो चुका है, बाकी आधा काम आपके साथ साथ हम पूरा करेंगे. So children, I hope all of you all are going to register for the Olympiads. और अब मैं इनवाइट करूंगी, सोशल साइंस का पार्ट जो है वो हम समझ चुके हैं बहुत डिटेल में, और अब मैम आएंगी, इंग्लिश एजुकेटर आएंगे, और वो आपको इंग्लिश ओलंपियाड की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो देंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Hello everyone, I am here to let you know everything related to English Olympiads. So let's start discussing the different levels, different exams which come under English Olympiads. I hope you all are ready to know about these different Olympiads. As you can see clearly on the screen, the very first exam that we are going to talk about is IEO, which is International English Olympiad. And the students from class 1 to 12, they all are eligible to write this exam. The second important exam, that is Unified International English Olympiad. In short, you can call it UIEO. That is also from class 1 to 12. And the third one is IOEL. Means International Olympiad of English Language for classes 1 to 12 again. So these are three major competitive exams which come under the category of Olympiad. Okay, moving on to the very first exam that we are going to talk about in detail, that's IEO, very famous exam. Okay, so IEO is conducted by SOF, that is Science Olympiad Foundation. Yeah, so SOF IEO exam. And now let's have a look at the exam pattern. We have taken the exam pattern from 6th to 10th, but this is specifically for class 9th and 10th. So even the students from class 6th to 10th can take benefit of this particular exam pattern, but the details will be discussed related to class 9th and 10th only. Okay, so let's have a look at the exam pattern. As you can see, there is the first section which is titled as Word and Structure Knowledge. Number of questions will be 30. And each question stands for 1 mark. Okay, and total marks will be 30 for this particular section, word and structure knowledge. So they're going to check your vocabulary, they're going to check whether you know the basic or the pillars of grammar, you know, and even they can ask you the dialogue so that you can fill the gap. So word and structure knowledge. The next one is reading. Comprehension, this is also called, yeah. So reading comprehension. Some unseen passages will be given to you and number of questions will be 10. Total marks 10. 1 question, 1 mark each. Like this. Next is section 3, spoken and written expressions. So mainly dialogues are asked. They give you the gap and they want you to fill the gap by choosing the most appropriate option in that dialogue. Okay, so that is spoken and written expression. This is called a section 3 and 5 questions will be there, 1 mark each question, so total marks 5. Section 4 is very, very important. This is called as achievers section. So the level of the question is a little higher in achievers section, and again there will be 5 questions and each question carries 3 marks, in total 15. Yeah, and this is how you get total number of questions as 50 and total marks stands as 60. I hope it is clear to you. Now, moving on to the syllabus of this exam. Don't be afraid. This seems to be very expansive. But when you start studying, when you start practicing, you will find it easier if you have been practicing English since junior classes. Okay, so your grammar must be polished. You have good knowledge of vocabulary. You should read, use and practice the frequently asked words. If you are good at that, nobody can stop you from qualifying these exams.
Okay, so have a look at the syllabus. You can even pause and you can jot down whatever you want to. From section 1, these are the topics which are mainly related to grammar and vocabulary. The second one is section 2, in which again they want to check whether you know the formats of specific things and whether you are able to supply the specific information which is asked in the question. So whether you're good at applying your knowledge, that is assessed in your section 2. Section 3, look at section 3 now. Ability to understand situation-based variations in functions like giving advice. Modal auxiliaries are used in such kind of notions, and even stating preferences like would you like to have a cup of coffee? So use of would is used in that. Basically, what do they want you to is, you should practice grammar as much as possible so that whatever question comes in whatever format, you should be able to supply the correct option. Okay, so if you have the complete knowledge of modals, reported speech, active passive, tenses, subject verb agreement, then you can easily solve this section also. So basically this is all about applying grammar, even discussing probability, like can is used when you talk about probability, and making an offer. Shall is used in that. So the use of modal auxiliaries is very, very important for this particular section. And the last section, that is for higher order thinking questions. Like they can ask you questions based on vocabulary basically, and the use of vocabulary. So that when you read the sentence, you should be able to find out which word is suitable for this particular gap. Okay, so knowledge of grammar, vocabulary, your reading skill must be practiced for qualifying these exams. So this is the exam syllabus for class 9th. Next, almost same, the syllabus of class 9th and 10th. The syllabus is absolutely same, you can say. Only a few differences you will find here and there. Otherwise, the syllabus is kind of same. Okay, so here also you have section 1, section 2, 3 and 4. Notions may change a little bit, like agreeing and disagreeing, requesting and seeking information. Again, they all take modal auxiliaries in this particular section, section number 3. And here, basic grammar is asked, like conjunctions, punctuations, voices, narration means direct and indirect speech, concord means subject verb agreement, question tags and so on. Means complete grammar, you can say. Yeah, so this is the section, this is the syllabus of class 10th. Moving on to the exam dates now. We have put almost the dates which are provided by the websites, but still you can wait for the final date as per given by your school. Okay, so these are the exam dates. Application deadline at least 30 days before the exam date. So your school will inform you whether the exam is going to be conducted in this month or any other, like that. So they will guide you. So before 1 month, they will start the registration and you have to apply for the same. Level 1 exam, if we talk about, then date of first exam means there are 3 different exams for level 1. You can choose any one as per your convenience, okay? So, or even sometimes school choose for you. So you have to go according to the school's choice. Yeah, so date of exam first is 26th September and exam second will be held on 11th November in 2025 and 26th November 2025. So these are the exam dates for level 1 and the result is declared in between December and January. So you get the results easily. Now English is the exam which is held very, quite before the other exams. Other competitive exams. Like you can see in the month of September itself, the exam starts. Yeah, so generally you don't have much time to prepare, but you do it on daily basis, you will be able to cover the entire syllabus. Okay, next is your level 2 exam, which is generally conducted in between February and March. You should not leave practice. Even if the result doesn't come, you should keep practicing. You never know when you qualify level 1 and level 2 will be in February and March. And the results of level 2 will be in between March and April. I hope you will remember these dates. You can come back again in this video anytime you want. Next is
UIEO, that is Unified Council Olympiad exam, that is conducted by the body Unified Council. Let's have a look. The exam pattern is like this. There are 3 sections. Section 1 will be having vocabulary and functional grammar. Number of questions will be 35 and 1 mark each. Section 2 is reading comprehension, that is RC, unseen passage, and 10 questions will be there. Section 3 is interactive English, means in the form of dialogue. You will be given a gap to fill by finding out the most appropriate option. Okay, so this is your section 3, which is interactive English. Grand total 50 and total marks also 50. This is UIEO exam pattern and this is the syllabus of the same. Now, whether it is IEO, UIEO or IOEL, the syllabus is quite similar, only the exam pattern varies a little bit. Okay, and this is how you have to cover all these topics for vocabulary and functional grammar. As you can see, you can pause the video if you want to jot down the syllabus. This is the syllabus that you have to cover: conditionals, punctuations, same words as different parts of speech. Like the same word can be used as a verb and you change a little bit, can be used as an adjective or an adverb, like that. Synonyms, antonyms, of course, you have to work on your vocabulary. So this is how you have to cover all this. This is not very difficult. This is the basic grammar that you have been studying. Only thing is that you have to update and work on is vocabulary. This is quite challenging for the students. But if you target 20 words every day, then definitely you can solve the questions based on vocabulary easily. So you should start targeting from now onwards, day 1 itself. Okay, 20 words every day. Use them, practice them, revise them, and you will be good at vocabulary by the duration of the exam or by the exam comes. Okay, so this is how you have to prepare. And then you have RC. At least 1 passage you should solve, maybe on alternate days or every day if it is possible. Otherwise, you can solve at least 2 passages in a week. That is required. Otherwise, your reading skill will be far behind and you will not be able to complete RC in time. You have to make sure that you're solving questions very quickly in the competitive exam. This is what is checked, whether you are able to analyze the question and find out the answer in a stipulated time. Okay, so interactive English consists of formal written English for communication, etiquette for personal telephonic conversations. So basically there are dialogues that are asked and various expressions seeking permission, introducing self, passing on information briefly but wholly, giving advice, consoling, warning. So different types of ideas will be there in that dialogue. You have to read and find out the meaning of the dialogue and supply the appropriate answer in the gap which will be provided to you. This is how you have to solve this particular exam or the practice paper. Now, let's talk about class 10th. This covers almost everything just like in class 9th. Some of the topics will be different, of course, because that is 9th and this is 10th. So, a little bit level will be higher. So, you should prepare according to that. Vocabulary and functional grammar, reading comprehension and interactive English. So, there are 3 sections basically that you have to prepare. Now, the dates. Application deadline will be intimated to you by your school. They will inform you what is the exam date that is suitable to your school. Accordingly, you will be informed. Okay, level 1 exam, if we talk about offline, then it's 11th November 2025 and also 21st November 2025. You should remember these dates if you want to apply for these exams. And if you are appearing online, then 28th January 2026 is the exam date. So this exam is conducted also online. These dates are mentioned which are tentative. Your school may change the dates. Okay, so just keep in touch with your school authority to find out the exact date of these exams and the registration. Now, last but not the least, Silver Zone Foundation conducts IOEL exam. This is a little challenging exam because the pattern of the question is quite different than that of IEO and UIEO. Let's have a look. IOEL contains grammar in the first section,
vocabulary in the second section, reading and comprehension skill, writing and speaking ability, and excellence zone, or which is also called as brilliance zone. So as you can see, there are more sections here, 5 sections in total. Yeah, so number of questions will be like this: grammar 12, vocabulary 8 questions specifically, reading or RC will have 3, writing and speaking ability 7, and excellence zone 5. So marking scheme is given there. You can pause the video and you can jot down if you want, or take a screenshot if you want. So 35 questions in total and 100 marks in total. But this is for 6th to 8th. Okay, this is for 6th to 8th. Now let's talk about 9th and 10th. Yeah, so this is 9th and 10th, which is meant for you guys. First is grammar, second is vocabulary, reading and comprehension skill, writing and speaking ability, excellence and brilliance zone. These are the number of questions that are asked from each section. 40 questions will be there in total and 100 marks. Marking scheme is important. You should be aware of every single thing related to the exam that you are appearing in. Okay, so you should have complete knowledge related to that exam, including the syllabus, including the exam pattern, including the marking scheme, almost everything. Then it will be easy for you to crack the competitive exam, and even how to prepare. So practice as much as possible, of course. Now this is the exam syllabus of class 9th. Syllabus, I said, class 9th. So grammar will have parts of speech, articles, determiners, modals, SVA, gerunds and infinitives, and tenses and error finding. So these are different topics that are asked in vocabulary, RC, and writing and speaking ability, and brilliance zone contains almost everything. They can ask you from anywhere in brilliance zone. You should be prepared accordingly. If you talk about class 10th, here is the syllabus which is given to you, including everything: grammar, vocabulary, RC, and writing and speaking ability, and the brilliance zone. I hope the syllabus is clear to you. Now, moving on to the next part, that is exam dates. Application deadline, first week of July to 31st August. You can apply for this exam. And level 1 exam, that is offline. We are giving you only the date for offline here, that is 13th November 2025. That will be the exam for level 1, the date. And the second date is 9th December 2025. Yeah, so again, I mentioned that these dates are tentative. Please keep in touch with your school authority to get to know the final dates. Now, that's all about different English Olympiads. I hope you got the idea what exam pattern and syllabus will be, but practice is the key. Find out practice papers, as many as possible. Solve them. Every week you should take at least one practice test, and then you will see that you pass with flying colors of success. Thank you for watching.